Good evening, sir. Good evening. We'll start with gravitation today. Okay. So, this is basically we'll be starting the second book from today. So we'll do gravitation, and then after this we'll start waves and not waves. We'll do some mechanical properties of matter, and then heat and thermodynamics, and then waves. And that will bring an end to class 11 syllabus. So let us start, and now we'll be going a bit fast. Why? Because these are all theoretical chapters. So not much of numericals come in this. So we'll try and do it faster. Okay. Wherever you don't understand, please stop me. So the introduction. So Galileo was the first to recognize the fact that all bodies, irrespective of their masses, fall towards the Earth with a constant acceleration. So what he recognized was that every object, whether it is lighter or heavier, all of these objects fall towards the Earth with a constant acceleration. In his demonstration, he allowed the bodies of different masses to fall from the same height and found that each body reaches the Earth in the same time. That is, each body is accelerated equally towards Earth. So what he did, he went at a height, and then he dropped two objects having different masses, and he observed that both of these objects reached the Earth at the same time, and hence he established this fact that they are accelerated towards Earth with the same acceleration. So, theory of planetary motion. So, right now we are following Kepler's law of planetary motion. But before that, there were various physicists who gave different theories. So, we'll discuss a bit of history of this planetary motion, and then we'll come to the present one. So the first authoritative work regarding the planetary motion was done by Ptolemy. So his theory was called the theory of planetary motion. So according to this theory, all the heavenly bodies like sun, star, planets, moon, etc. are moving around the earth, which is stationary and was taken as the center of universe. The theory was named as geocentric theory. तो theory इन्होंने define किया था, वो ये किया था कि जितने भी है ना heavenly bodies हैं, वो सभी earth के आसपास घूमते हैं, earth के चारों तरफ घूमते हैं. So which was known as geocentric theory. So which was proven wrong later on. As geocentric theory means a system with earth as center, hence the name geocentric theory. This theory was challenged by Copernicus. So Copernicus said that this theory is So Copernicus said that this theory was wrong. So Copernicus suggested that the description of motion of heavenly bodies would be simplified and more properly explained if we assume that sun is stationary and earth as well as other planets are revolving around it. तो उन्होंने बोला कि ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज का तब आएगा अगर हम सन को स्टेशनरी मान लेते हैं और सेंटर पे मानते हैं और बाकी प्लैनेट्स और अर्थ ये सारे जो है ये सब सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. सो दिस थ्योरी वाज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. This theory was later on supported by Galileo from his experimental study on moon and other planets. So it was also supported by Galileo later on. So Copernicus gave this heliocentric theory. Heliocentric theory मतलब sun को stationary मतलब center मान के बाकी सारे planets उसके चारों तरफ revolve कर रहे हैं ऐसा. So geocentric theory था जो कि इन्होंने दिया था Ptolemy ने दिया था, which was proven wrong, and later on heliocentric theory आया, Copernicus ने दिया, जिसको Galileo ने भी support किया, and which replaced basically the planetary motion of Copernicus, of Ptolemy. Now then came Kepler's law of planetary motion.
So Kepler carried out the analysis of the whole astronomical data on the basis of Copernicus theory. As a result of his investigation, he formulated the following three laws of planetary motion. So Copernicus ने जो थ्योरी दिया था उसी पे आगे वर्क करते हुए केपलर ने अपना लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन्होंने दिया. तो उसमें he gave certain rules, three laws of planetary motion which we will be studying now. 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था केपलर्स लॉ. केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो जो भी प्लैनेट है दैट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो वहां पहले जो सर्कुलर ऑर्बिट माना जाता था बट वो एक्चुअली एलिप्टिकल ऑर्बिट है. सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स, जहां पे सन को हम लोगों ने एक फोकस पे मान लिया. दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन सिचुएटेड. The ellipticity of the orbit is, however, very slight, and the orbit may be taken as nearly circular. तो ये जो elliptical ये जो ellipticity है ना, कि कितना ज्यादा elliptical है ये शेप, ये बहुत slightly elliptical है और almost इसको हम circular मान सकते हैं. So angular momentum of the planet orbiting the sun is constant. तो ये because circular orbit में है तो angular momentum of planet around the sun will be constant. Now Kepler's first law, circular orbit में जा रहा है तो angular momentum conserved रहता है. Now Kepler's first law is based on inverse square law. In figure from the sun, the closest point is P, called aphelion. Okay. And the midpoint O. Wait a minute. Sorry. Yeah, so in figure from this, the closest point is P. ये गलत लिखा, closest point P नहीं होगा. Closest point is P और इसको एपीहीलियन नहीं पेरीहीलियन कहते हैं. एपीहीलियन ये वाला पॉइंट है A, जो farthest point होता है. Let me check, just a second. Okay? Yeah. So this closest point is P, which is called perihelion. Okay. This is not ephelion. Please correct it. This is perihelion. So P से perihelion है, इसलिए भी याद है मुझे, और A से ephelion है. So farthest point को ephelion कहते हैं और जो nearest point है उसको perihelion कहते हैं, है ना. और ऐसे भी याद रखो, P से होता है पास, राइट. तो पास मतलब पेरीहीलियन, P से पास और पेरीहीलियन, और जो दूसरा वाला होगा एपीहीलियन, जो दूर होगा वो एपीहीलियन हो गया. ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है. The midpoint O of the line PA is the center of ellipse, right? So ये जो midpoint O है, this is the center of the ellipse. The length PO and AO is equal to A. तो ये जो PO है और AO दोनों A के बराबर है, जिसको A बेसिकली सेमी माइनर एक्सेस होता है, सेमी मेजर एक्सेस होता है, और B जो है सेमी माइनर एक्सेस होता है. Okay. So P is perihelion and the farthest is A, which is called ephelion. So this is the farthest point.
and perihelion is the closest point. Okay. So PO and AO is A, which is called semi major axis. अभी हम लोग एलिप्स पढ़ेंगे जब मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन में, तो आप देखिएगा कि जो मैथमेटिक्स में जब हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं तो ये दोनों फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ एलिप्स हो जाता है, और सेंटर से जो ये फारदेस्ट पॉइंट मतलब ए का जो डिस्टेंस है, इसको इस वाले एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, सॉरी मेजर एक्सिस कहते हैं, और इस वाले को माइनर एक्सिस कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं. सेमी मीन्स हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, सो दैट्स व्हाई सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए. Now, eccentricity of an elliptical orbit E is defined as the ratio of distance of one focus from the center of the ellipse, which is SO, to the distance of semi-major axis of the ellipse, that is OF. So, if we OF ne OP, distance of semi-major axis and distance of center. So ये OP SO divided by OP will give you focus का distance center से, ये जो focus का distance center से divided by semi major axis OP is given as eccentricity of the elliptical orbit. ये सब सारी चीजें हम लोग कोनिक सेक्शन में भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में डिटेल में. So E is equal to SO upon OP हो गया. तो SO by जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. इक्वेशन ऑफ एलिप्स तुम देखोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. तो जहां पे अगर हम लोग ये एलिप्स को शो कर रहे हैं, राइट, तो ये डिस्टेंस ए होता है और ये डिस्टेंस बी होता है, राइट. सेंटर से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है ए है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस बी है. ओके. Now, so equation of this ellipse is x square by a square. मतलब ये देखो ये x axis है और ये y axis है. तो x axis के along जो वाला side है a है, तो x square by a square हो गया और y square by b square हो गया. This is equal to 1. तो ये equation of ellipse होता है. So this is equation of ellipse. और eccentricity of ellipse कि कितना ज्यादा वो एलिप्टिकल है, ये मेजर करता है ई का वैल्यू. तो ई का वैल्यू क्या है? एसओ बाय ओपी, मतलब फोकस का सेंटर से डिस्टेंस और एंड पॉइंट का पी पॉइंट का पेरिहीलियन या एपीहीलियन जो भी ले लो उसका ओ से डिस्टेंस. तो एसओ बाय ए हो गया. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. एसओ इज इक्वल टू ए. तो जो फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, तो ये जो एसओ है दिस इज इक्वल टू ए इंटू ई हो जाता है. ठीक है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ए कॉमा 0. और दूसरा फोकस इधर होगा. एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक ये और एक यहाँ पे होगा. वो हो जाएगा प्लस ऑफ ए कॉमा 0. ये माइनस ए कॉमा 0 है, ये प्लस ऑफ ए कॉमा 0. ओके. सो eccentricity of the elliptical orbit is SO by OP, that is SO by A, that is SO is equal to A into E. Now refer to the figure. इस फिगर को अगर हम देखें, SP S का P से जो डिस्टेंस है ये RP हो गया, S का A से जो डिस्टेंस है वो RA हो गया. सो SP क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस SP है इसमें OP PO से SO को सब्ट्रैक्ट कर लो, A माइनस AE कर दोगे तो A इंटू 1 माइनस E हो गया. उसी तरह SA निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू A प्लस ऑफ AE, तो दिस इज A 1 प्लस E. तो ये हमारा SP और SA हो गया. तो SA बाय SP करोगे तो दिस इज इक्वल टू RA अपॉन RB, और मतलब RA अपॉन RP, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ एपीहीलियन बाय डिस्टेंस ऑफ पेरीहीलियन is A into 1 plus E by A into 1 minus E. A cancel हो गया दोनों तरफ, तो 1 plus E by 1 minus E. So R of ephelion by R of perihelion
is equal to 1 plus E divided by 1 minus E. So this is also another important relation. For an ellipse, E is always less than 1. तो जो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा 1 से लेस है. अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर हो जाता है तो ये एलिप्स क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है. ठीक है. So for ellipse, E is less than 1. So for a circle S coincides with O, SO is equal to 0. ठीक है. एस ओ के साथ कोइंसाइड कर जाएगा. सर्कल में फोकस क्या है? ओ पॉइंट पे ही आ जाता है. तो एसओ 0 हो जाता है. एसओ 0 हो जाता है तो इसेंट्रिसिटी ई भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. सॉरी, ई 0 के बराबर होता है सर्कल, ई 1 के बराबर स्ट्रेट लाइन. तो ई इज इक्वल टू 0 पे हमारा सर्कल होता है और ई इज इक्वल टू 1 पे स्ट्रेट लाइन होता है. नाउ द पॉइंट एट विच a planet in its orbit is closest to the sun is called perihelion, and the point at which planet in its orbit is at the farthest point of the sun is called aphelion. Now the maximum distance of a planet from the sun is RA. मतलब सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्लैनेट का होगा जब ए पे होगा तब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज ए इंटू 1 प्लस ई. एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये आरपी के बराबर. प्लैनेट सबसे नियर यहाँ पे आएगा, राइट. जब पी पॉइंट पे होगा तो एक्सट्रीम हॉट वेदर होगा, जब ए पॉइंट पे हो तो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होता है. सो द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन आरपी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई. लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए का वैल्यू निकालोगे तो तुम क्या करो? आर ए प्लस आर पी करके इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा. सो ए इज इक्वल टू आर ए प्लस आर पी डिवाइडेड बाई 2. इसेंट्रिसिटी को हम लोग आर ए आर पी के टर्म्स में लिखें तो आर ए माइनस आर पी बाई आर ए प्लस आर पी हो जाएगा. In case of an elliptical orbit of planet of semi major axis and semi minor axis B, semi major axis A है, semi minor axis B है, एरियल वेलोसिटी इज गिवन बाय dA by dt. एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी प्लैनेटरी मोशन में. एरियल वेलोसिटी का मतलब, अगर ये हमारा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो जितना एरिया स्वीप करेगा, अगर प्लैनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, मान लो ए से बी तक पहुंचा, तो एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, राइट, आई एम सॉरी, यहाँ पे सन, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, दिस एरिया, I'll draw it again. So area swept by the planet when it reaches from one point to other point. So this area is basically known as the aerial velocity. Area, rate of area which is being swept by the planet when it moves from point A to point B in time t is aerial velocity. So dA by dt will be equal to pi AB divided by capital T. Capital T is the complete time period for a planet to complete the whole, one revolution. So one revolution लगाने में जितना time लगेगा, that is taken as capital T. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kepler's second law है, the line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. So line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. तो यही हम जो बात कर रहे थे. देखो यहाँ पे प्लैनेट P1 से P2 तक जो जाता है, राइट, तो T टाइम में जितना एरिया स्वीप करेगा और यहाँ पे उतने टाइम में यहाँ पे देखोगे जो एरिया स्वेप्ट आएगा, ये दोनों एरिया सेम होगा. एरिया स्वेप्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. सो P1 से P2 जाने में और P3 से P4 आने में एरिया स्वेप्ट सेम है, बट डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो ये P1 P2 लेस है और P3 P4 क्या है, ज्यादा है. मतलब जब सन के पास प्लैनेट आता है तो इट स्टार्ट्स मूविंग एट अ फास्टर स्पीड एज कंपेयर्ड टू व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन. Is it clear? So speed is not constant here. Speed changes as planet comes near the sun. Its speed increases.
and as the planet moves away from the sun, its speed decreases. So the line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. Okay? So this is Kepler's second law. To keep the aerial velocity constant, the linear speed of the planet goes on changing. Linear speed क्या होगा? Change करेगा. जैसा कि हमने बात किया, जब दूर होगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ही एरिया कवर करने में. इसीलिए स्पीड प्लैनेट का इंक्रीज कर जाता है जब वो सन के पास आता है, और स्पीड उसका डिक्रीज कर जाता है जब सन से दूर जाता है. So linear speed is more when the planet is close to the sun and less when it is away from the sun. To understand it, consider a planet moves from P1 to P2 or from P3 to P4 in the same time t. So P1 to P2 or P3 to P4 same time में आता है. In this situation, the area P1S P2, ये जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया है, this area P1S P2 is equal to area of P3S P4. Both the areas are same. Okay, so since SP1 is greater than SP3, यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है P1 का, जो S से डिस्टेंस है, that is greater than SP3. SP1 is greater than SP3. Therefore, P1 P2 is less than P3 P4. है ना? Because radius, यहाँ पे रेडियस जो है हमारा ज्यादा है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस P1 P2 होगा ये लेस होगा एज कंपेयर टू P3 P4. दोनों तरफ टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट मीन्स P1 P2 by T is equal to P3 P4 by T. So hence P1 P2 upon T is linear speed of the planet in position P1 is equal to P3 P4 by T means linear speed of the planet in position P3. ठीक है, तो P3 पे linear speed will be less, sorry, it will be greater as compared to the linear speed at P1. Thus, from 1, we note that linear speed of the planet when closer to the sun is more than its linear speed when it is away from the sun. This we have already established. So, when the planet is closer to the sun, its linear speed is more than when it is away from the sun. Kepler's second law, which is also known as law of areas, is based on law of conservation of angular momentum. ठीक है, सो ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे. कैसे बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे? मान लो एक प्लैनेट है, सो यहाँ पे सन हो गया, ये जो डिस्टेंस है आरपी हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये आर ए हो गया, ये एपीहीलियन है और ये पेरीहीलियन, ये सन हो गया. Now MVP RP यहाँ पे और यहाँ पे, मान लो यहाँ पे स्पीड VP है और यहाँ पे स्पीड VA है. सो MVP right into RP, angular momentum at P will be equal to angular momentum at A. ठीक है, according to law of conservation of angular momentum. M और M कैंसिल हो गया, तो VP by VA किसके बराबर हो गया? RA by RP के बराबर हो गया. राइट, सो केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ ना, जो हमें पता है कि RA, सिंस RA is greater than RP, this implies VP will be greater than VA. So velocity at perihelion is greater than velocity of ephelion. That comes from conservation of angular momentum. Is it clear? Yes sir. Yes sir. जब क्वेश्चन इस तरह से आएगा भाई कि prove the Kepler's second law is based on law of conservation of angular momentum.
तो ये करके दिखाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए नाउ केपलर्स थर्ड लॉ ये क्या कहता है, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव लॉ कहा जाता है। बेसिकली ये जब फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ जाती हैं तो उसको क्वांटिटेटिव रिलेशन कहा जाता है। So Kepler's third law states that the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. So square of the time period t square is directly proportional to r cube. So where t is time taken by the planet to go once around the sun and r is the semi-major axis of the elliptical orbit. So time taken to go once around the sun is capital T, r is semi-major axis. So t square is directly proportional to r cube. So now deduction of Kepler's third law, right? So Kepler's third law का deduction अगर देखें तो ये basically Newton's law of gravitation से आता है. So consider a planet of mass m is orbiting around the sun of mass capital M in circular orbit of radius r. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है रेडियस r पे with a constant angular velocity omega and time period of revolution t. Then ये हमें पता है gmm by r square, फोर्स क्या हो गया F is equal to gmm by r square. तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो यहाँ पे सन है मास m का और एक प्लैनेट है मास स्मॉल m का, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा gmm by r square. तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that will provide the necessary centripetal force for this planet to move in a circular orbit. Because ये circular orbit में move कर रहा है तो centripetal force होगा, वो centripetal force कौन provide कर रहा है, ये gravitational force provide कर रहा है. तो इसीलिए इसको centripetal force से equate कर देते हैं m omega square r. अब ये small m और small m cancel हो गया, right? So you can write अब एम आर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा टोटल है 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में, टी टाइम लगता है, तो 2 पाई आर बाई टी हो गया, राइट? तो ये हमारा जो है लीनियर वेलोसिटी है. अब v बाय आर ओमेगा होता है, अगर हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो टोटल जो एंगल जा रहा है 2 पाई और कितने टाइम में, कैपिटल टी में, टी टाइम में, तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा. तो यहाँ ओमेगा के जगह 2 पाई बाई टी डाल दो, तो हमारा जो इक्वेशन है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये अब हमारा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर. सो इससे आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. टी स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब. ये पूरा कांस्टेंट है. अर्थ के केस में जी का वैल्यू, सॉरी एम का वैल्यू, जी का वैल्यू और पाई ये सब कांस्टेंट है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? आर क्यूब से टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के. Is it clear? तो ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी हम लोग पढ़ेंगे भी ये डिटेल में, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही हो. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग प्रूव कर सकते हैं. नाउ डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम से हम लोगों ने डिडक्शन तो वहां पे किया ही था अभी. So it can be deduced from the knowledge of conservation of angular momentum from the geometrical interpretation of angular momentum. The angular momentum L of a moving mass, of a point mass, body of mass m, rotating about a given axis with areal velocity dm dA by dt. So L is equal to 2m into dA by dt. So
Now, a planet revolves around the sun in an elliptical orbit under the influence of gravitational pull of sun on the planet. This pull or force F acts along the line joining the centers of the sun and the planet and is directed towards the sun. Here F is the central force, therefore angle between R and F is 180 degree. So now tau is equal to R cross F को हम लोग solve करेंगे. RF sin 180 degree, sin 180 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So torque is equal to rate of change of angular momentum dl by dt. Torque 0 है, dl by dt 0 हो गया, मतलब L क्या हो गया? Constant हो गया. So from 3 and 4 we see that 2m dA by dt is also constant by, or dA by dt is also a constant value. Okay. Clear बच्चों? So this proves that the Kepler's second. This proves the Kepler's second law of planetary motion. Just give me a moment. I'll just put in 2 questions and then solve that. Just give me a moment. Now, the time period of Jupiter is 11.6 years. So time period of Jupiter is 11.6 years. How far is Jupiter from the Sun? Distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 to the power 11. So we know that, see, time period of Jupiter हम लोग को दे रखा है 11.6 years. Right. हमें distance of Jupiter from the Sun निकालना है, RJ निकालना है. उसके अलावा time period of Earth is equal to 1 year. Okay. And distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 to the power 11. Right. We know that T square is proportional to R cube. तो इससे हमारा आ जाएगा T by TJ by TE का whole square is equal to RJ by RE का whole cube. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. So TJ is 11.6 by 1 whole square. Radius of हम लोग को जुपिटर निकालना है, RE is 1.5 into 10 to the power 11 raised to the power 3. So this will be 11.6 square
134.56 आता है, 134.56 into 1.5 या 134.56 raised to the power 1/3 अगर कर दें तो ये RJ by 1.5 into 10 to the power 11 हो जाएगा. So RJ is equal to so this is 5.124 into 1.5 into 10 to the power 11. So 7.68 into 10 to the power 11 meter. So this is the distance of Jupiter from Sun. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Next is the time period. So time period of a satellite of Earth is 8 hours. So Earth का एक satellite है, उसका time period 8 hours है. If the separation between the Earth and the satellite is increased to 2 times the previous value, find the new time period of the satellite. So T square is proportional to R cube. So T1 by T2 का whole square is equal to R1 by R2 का whole cube. अब ये कह रहा है कि T1 इनिशियली 8 आवर्स था, बाद का हम लोग को न्यू टाइम पीरियड निकालना है, is equal to R1 if the separation between the Earth and the satellite is increased to 2 times, means R2 is equal to twice of R1. So this is 8 by T2 whole square is equal to R1 कट गया, 1 by 8 हो गया, right? So this is 64 into 8 का square root is equal to T2. So T2 is equal to 22.62. Clear है बच्चों? Yes. Yes. Now deduction of Newton's law of gravitation from Kepler's law. Okay. So Newton's law of gravitation can be easily obtained from Kepler's law of planetary motion. Suppose a planet of mass m is revolving around the sun of mass capital M in a nearly circular orbit of radius r with a constant angular velocity omega. Let t be the time period of revolution of the planet around the sun. We know that angular velocity क्या है? Total angular displacement by total time 2 pi by t हो जाएगा. The centripetal force acting on the planet for its circular motion will be m omega square r. यहाँ पे m into r omega square 2 pi by t का whole square हो गया. So m r into 4 pi square by t square हो गया. So ये force हो गया. According to Kepler's third law, t square is proportional to r cube. So t square is proportional to r cube. T square को k times r cube put कर लेते हैं. तो k टाइम m r 4 pi square k times r cube.
ये r और इसको कट करेंगे, r स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर बाय k इंटू m बाय आर स्क्वायर. सो फोर्स क्या हो गया, m बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया. दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन exerted by the sun on the planet. According to Newton, the gravitational attraction between the sun and the planet is mutual. So if the force F is directly proportional to the mass of the planet, it should also be directly proportional to the mass of the sun. Hence, 4 pi square by k is proportional to m, or sorry, proportional to m, or 4 pi square by k is equal to g times m. Okay. So that means putting this value we get f is equal to जो 4 pi square by k था उसके जगह g capital M कर देंगे. F is equal to gmm by r square, which is Newton's law of gravitation. So on the basis of Kepler's law, Newton concluded the following. पहला, a force, उन्होंने Kepler's law से ही basically न्यूटन ने अपना law of gravitation दिया. तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने जो कंक्लूड किया, कंक्लूजन पहला, a force is acting on the planet due to sun, which is the centripetal force, is directed towards the sun. A force acting on the planet must be inversely proportional to the square of the distance from the sun, right? So force is inversely proportional to square of the distance from the sun. Force acting on the planet is directly proportional to the product of the masses of the planet and the sun. Means F is proportional to m into small m. So force is proportional to product of masses, inversely proportional to square of the distance between them. Ab gravitation, so gravitation is the name given to the force of attraction between any two bodies of the universe. ठीक है, दोनों में फर्क है, gravitation और gravity में फर्क है. ग्रेविटेशन क्या है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स होता है. ग्रेविटी में बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, उसको ग्रेविटी बोले. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. उसमें अर्थ होना जरूरी नहीं, मतलब एक कैलकुलेटर और एक पेन के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशन. So gravitation is the name given to the force of attraction between any two bodies of the universe. Gravitational force is the weakest force among the four fundamental forces of nature, but is the most important force because it played an important role in initiating the birth of stars and controlling the entire structure of the universe. So जितने भी चार फंडामेंटल फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस और ये सब हैं, उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स माना जाता है. But it is very important because it has played an important role in the birth of stars and all these heavenly bodies and controlling the entire structure of the universe. So gravitation has played an important role. Now Newton's law of gravitation, it states that every body in this universe attracts every other body. ठीक है, यहाँ पे एक गैप दे देना. So it states that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So that means ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं. Force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. Right? This is what is known as Newton's law of gravitation. Consider 2-point mass bodies A and B of masses m1 and m2. मान लो दो मास है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. Let r be the distance between their centers. इनके बीच के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, let's say ये r है, let r be the distance between their centers and F be the force of attraction between them. So according to Newton's law of gravitation, F is proportional to m1 m2 by r square, or F is equal to g times m1 m2 by r square. Proportionality sign को अगर equality sign से replace करेंगे तो वो
एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको कि हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. So universal gravitational constant is equal to the force of attraction acting between two bodies each of unit mass. तो जो g है किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर. कब होगा फोर्स के बराबर? जब m1 और m2 का वैल्यू 1 के बराबर हो. तो जो कह रहा है यूनिट मास मतलब 1 1 के बराबर है. उस सेंटर आर प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, मतलब r का भी वैल्यू 1 है. मास m1 और m2 का वैल्यू 1 1 kg हो गया और r जो है वो 1 मीटर हो गया. तब जो फोर्स लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. उस कांस्टेंट का कोई डायरेक्शन नहीं है. तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Its value is same throughout the universe and is independent of the nature and the size of the body as well as nature of the medium between the bodies. So the value of G in SI is given as 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Now in the CGS 6.67 into 10 to the power minus 8 dyne centimeter square per gram square. So ये CGS यूनिट में 6.67 into 10 to the power minus 8 होता है और SI यूनिट में 6.67 into 10 to the power minus 11. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है, देखो F हम लोग लिख रहे हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा m1 m2 r और ये l स्क्वायर हो गया. इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l स्क्वायर उधर चला गया तो m1 lq और t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. तो ये कैंसिल करोगे -1 हो जाएगा. सो m माइनस 1 l3 t माइनस 2 ये हमारा g का डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो क्या क्या एविडेंस सपोर्ट करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? पहला, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और मून अराउंड द अर्थ is explained on the basis of this law, right? Second, the prediction about solar and lunar eclipses made on the basis of this law always came out to be true. तो जो सोलर और लूनर एक्लिप्स का जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं इस लॉ के हिसाब से करते हैं तो हमेशा ट्रू आता, सही आता है. तीसरा, the formation of tides in the ocean is due to the force of attraction between moon and the ocean water, and the prediction about the orbit and time period of the modern artificial satellites made on the basis of this law are found to be very accurate. So these are the evidences which supports the Newton's law of gravitation. Vector form of Newton's law of gravitation. ये थोड़ा लंबा है, लोग अगली क्लास में करेंगे इसको, ठीक है? सबका एग्जाम खत्म हो गया?